the exception of Indigenous peoples, everyone in Canada has an immigration story somewhere in their past. Canada has been a land of opportunity for millions of people, whether they're from Scotland, like my ancestors, or from Asia, Africa, Europe, the Americas, and everywhere else. Immigrants have helped to build our great country as to what it has become today. Canada's story is largely built on many stories, millions of stories of immigration. And our country is a destination of choice for hundreds of thousands of people from around the world every year. Canadians have long been proud that so many people wish to come here and begin a new life in our country. Now, we've shown the rest of the world how people from different backgrounds, from different parts of the world, can live peacefully together to create one of the most prosperous and inclusive countries on the planet. Newcomers have long been major economic contributors to our country. And the last 2 years in particular have underscored just how crucial immigration is to Canada and to our communities. Newcomers are key to addressing the labor shortage that Canada faces and to building back stronger from the pandemic. Newcomers have played an essential role on the front lines of the pandemic in our hospitals, in food production, working in agricultural operations, on farms big and small right across the country, working in the manufacturing sector, making sure we have access to the goods that we need in the transportation sector. Canada announces measures to improve immigration processing time. Canada wants to use $85 million budget to return to normal processing standard for various immigration programs by the end of the year. This is Khalil. If you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe it. Hit the bell icon button to get new videos notification on times. Stay with me till the end of this video. It's going to be informative and interesting. Immigration Minister Sean Fraser has brought forward Canada's plan to get the immigration system back on track. In the 2021 budget, Canada allocated $85 million to reduce processing time across all IRCC lines of business. Prime Minister Justin Trudeau also called on Fraser to reduce processing time in the minister's mandate late. Fraser is now saying the budget will allow Canada to return to processing services standard for study permit, work permit, and permanent residence card renewals by the end of the year. Canada is also working to reduce processing time for visitor visas and proof of citizenship. IRCC made decision on over 500,000 permanent residence applications in 2021. Fraser announced that Canada is planning to make 147,000 permanent residence final decision in the first quarter of 2022, doubling that from the same period in 2021. Canada will also introduce a new permanent residence application tracker in February 2022 for spouses and dependents, and that is already introduced to allow applicants to see their application information and status online. And this application tracker has been already introduced in February 2022, guys. I have made video on that. In recent weeks, internal IRCC documents have revealed the department's actual anticipated processing time for economic immigration programs are much longer than what it says on the government website. Fraser said Canada will update the online processing time tool in the coming months to give IRCC clients more up-to-date estimates of how long it will take to processing applications. According to a November 24 memo, at the time, IRCC was expecting foreign skilled worker program application processing to take 20 months, well beyond the processing standard of 6 months for express entry managed program. The same memo said processing time was expected to be nearly 8 months for Canadian experienced class candidates. The memo also suggested express entry draw would not invite FSWP and CEC candidates for the first half of 2022. Fraser did not give a date for when these draws would resume, but said the measures introduced today were intended to speed up immigration processing. He said pausing these draws to process the express entry inventory will allow IRCC to eventually hold draws without further aspirating the backlog. Immigration Canada is currently facing a backlog of more than 1.8 million people waiting on decision. This includes citizenship applications, temporary foreign workers, families and students, refugees and visitors applications. The express entry backlog alone stands at about 119,000 applicants as of December 2021. For express entry candidates in Canada who may have to leave their jobs or leave Canada while IRCC holds off on draws for certain candidates, Fraser said they are looking at options to keep workers in Canada, but they have not yet come up with a perfect solution. How IRCC has started to reduce processing time, what strategy they have used. Pandemic highlighted the end of the need for IRCC operations to modernize. In response to pandemic-related challenges, IRCC has hired about 500 new processing staff, digitized applications, and reallocated work among IRCC offices around the world. Since public health measures reduced in-person services, IRCC has brought some paper-based immigration programs online.
IRCC has also developed a portal to allow permanent residence applicants in Canada to finalize their process and receive their permanent residency card without any in-person interaction. From June 2021 to December 2021, 225,000 permanent residents have used this portal. IRCC recently issued a media release saying it is using advanced data analytics to speed up temporary residence visa applications. The system does not refuse or recommend refusal of applications. IRCC says only immigration officers can do that. It was first implemented in 2018 and allow applications to be assessed 87% faster. For citizenship application, IRCC has introduced online testing, created an online application tracker, and launched virtual citizenship ceremonies. Canada has sworn in 170,000 new Canadians since April 1st, 2020. Canada is continuing to expand the use of virtual ceremonies. In the future, Canada is looking to allow people to self-administer their oath by sign attestation and celebrate their citizenship at a later date. This would shorten the waiting time for those at the final stage of their citizenship process. If you found this video interesting and helpful, then give a big thumb to this video. Comments below if you have any. Like the video as well. Thanks for watching this video. Have a wonderful day, guys. कनाडा ने इमिग्रेशन प्रोसेसिंग के औकात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का ऐलान किया है। कनाडा साल के आखिर तक मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्रामों के लिए आम प्रोसेसिंग के मेयार पर वापस आने के लिए $85 मिलियन का बजट इस्तेमाल करना चाहता है। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने इमिग्रेशन सिस्टम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कनाडा के मंसूबे सामने लाए हैं। 2021 के बजट में कनाडा ने कारोबार की तमाम IRCC लाइनों में प्रोसेसिंग के औकात को कम करने के लिए $85 मिलियन मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी फ्रेजर से मिनिस्टर के मैंडेट लेटर में प्रोसेसिंग के औकात को कम करने का मुतालबा किया। फ्रेजर अब कह रहा है कि बजट कनाडा को साल के आखिर तक स्टडी परमिट, वर्क परमिट और मुस्तकिल रिहायशी कार्ड की तजदीद के लिए प्रोसेसिंग सर्विस के मेयार पर वापस आने की इजाज़त देगा। कनाडा विजिटर वीज़ा और शहरियत के सबूत के लिए प्रोसेसिंग के औकात को कम करने के लिए भी काम कर रहा है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने 2021 में 5 लाख से ज्यादा मुस्तकिल रिहायशी दरख्वास्तों पर फैसले किए हैं। फ्रेजर ने ऐलान किया कि कनाडा 2022 की पहली छमाही में 1,47,000 मुस्तकिल रिहाइश के हतमी फैसले करने का मंसूबा बना रहा है। फरवरी 2022 में मियाँ बीवी और ज़ेर किफ़ालत अफराद के लिए एक नया मुस्तकिल रिहायशी दरख्वास्त ट्रैकर भी मुतारिफ कराएगा ताकि दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी दरख्वास्त की मालूमात और स्टेटस ऑनलाइन देखने की इजाज़त दी जा सके। हालिया हफ्तों में अंदरूनी IRCC दस्तावेज़ात ने इंकशाफ किया है कि इक़्तिसादी इमिग्रेशन प्रोग्रामों के लिए महकमे के असल मुतवक्के प्रोसेसिंग के औकात हुकूमती वेबसाइट पर बताए गए वक्त से कहीं ज़्यादा हैं। फ्रेजर ने कहा कि कनाडा आने वाले महीनों में ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम टूल को अपडेट करेगा ताकि IRCC क्लाइंट्स को मज़ीद अप टू डेट तखमीना फराहम किया जा सके कि दरख्वास्तों पर कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा। 24 नवंबर के मेमो के मुताबिक इस वक्त IRCC तवक्को कर रहा था कि फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP की दरख्वास्त की प्रोसेसिंग में 20 माह लगेंगे, जो एक्सप्रेस एंट्री के जेर इंतजाम प्रोग्रामों के लिए 6 माह के प्रोसेसिंग मेयार से भी आगे है। इसी मेमो में कहा गया है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के उम्मीदवारों के लिए तकरीबन 8 माह की कार्रवाई मुतवक्के है। मेमो में ये भी तजवीज़ किया गया था कि एक्सप्रेस एंट्री कुरानंदाजी 2022 की पहली छमाही के लिए फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उम्मीदवारों को मदऊ नहीं करेगी। फ्रेजर ने इस बात की तारीख नहीं बताई कि यह कुरानंदाजी कब दोबारा शुरू होगी, लेकिन कहा कि आज मुतारिफ कराए गए इक़दामात का मकसद इमिग्रेशन प्रोसेसिंग को तेज करना है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस एंट्री इन्वेंट्री पर कार्रवाई करने के लिए इन कुरानंदाजी को रोकने से IRCC को आखिरकार बैकलॉग को मजीद परेशान किए बगैर कुरानंदाजी करने का मौका मिलेगा। इमिग्रेशन कनाडा को फिलहाल फैसलों के इंतजार में 1.8 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैकलॉग का सामना है। इसमें citizenship applicants, temporary residents, family sponsorship, students, refugees and visitors शामिल हैं। अकेले एक्सप्रेस एंट्री का बैकलॉग दिसंबर 2021 तक तकरीबन 1,19,010 एप्लीकेंट्स पर मुश्तमिल है। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के उम्मीदवारों के लिए जिन्हें अपनी मुलाजमतें छोड़ना पड़ सकती हैं या कनाडा छोड़ना पड़ सकता है, जबकि IRCC कुछ उम्मीदवारों के लिए कुरानंदाजी को रोकता है। फ्रेजर ने कहा कि वो कारकुनों को कनाडा में रखने के लिए ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि प्रोसेसिंग में ताखीर बहुत से लोगों के लिए नाक़िबिल यकीन हद मायूस कुन रही है। फ्रेजर ने एक मीडिया रिलीज में कहा कि पेशन गोई के काबिल प्रोसेसिंग औकात और IRCC के साथ मौसर मवासलत के साथ क्लाइंट्स को तेजी से कनाडा आने में मदद करना मेरे लिए अव्वलीन तरजीह है। इमिग्रेशन से तमाम कैनेडियनों को फ़ायदा होता है। वबाई अमराज से मुतालिक चैलेंजों के जवाब में IRCC ने तकरीबन 500 नए प्रोसेसिंग स्टाफ को मुकर्रर किया है, जो कि डिजिटाइज्ड एप्लीकेशंस और दुनिया भर में IRCC के दफातर के दरमियान दोबारा काम करने की खिदमत हासिल। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 2022 के मौसम बहार या मौसम गर्मा में मुकम्मल तौर पर लागू हो जाएगा। IRCC का कहना है कि अब तक इन कोशिशों ने मियां स्पाउसल एप्लीकेशन की दरख्वास्त दहिंदगान को
12 ماہ کے سروس کے معیار پر واپس آنے کی اجازت دی ہے نئی اپلیکیشنز کے لیے۔ IRCC نے ایک پورٹل بھی تیار کیا ہے جس سے کینیڈا میں مستقل رہائش کے درخواست دہندگان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے عمل کو حتمی شکل دے سکیں اور بغیر کسی ذاتی بات چیت کے اپنے مستقل رہائشی کارڈ حاصل کر سکیں۔ جون 2021 سے دسمبر 2021 تک 2,25,000 مستقل باشندوں نے اس پورٹل کا استعمال کر لیا ہے۔ IRCC نے حال ہی میں ایک میڈیا ریلیز جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ عارضی رہائشی ویزا ٹیمپوری ریزیڈنس ویزا درخواستوں کو تیز کرنے کے لیے جدید ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یوں اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اگر کوئی کمنٹس ہوں تو پلیز اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت جلد کینیڈا میں ملاقات ہوگی۔